Hello students, this is Ipshita Gangopadhyay, teacher from Trinity International School. Students, we have already started with the chapter number 7, factors and multiples. In our previous videos, we have already learned about factors and multiples of a number. We have learned about the odd numbers, even numbers, prime numbers and composite numbers. And with that, we have also learned to find out the prime factors using factor tree method and prime factorization method. Now, today in this video, we will be learning about the tests of divisibility of numbers. Now, divisibility tests is a test or a rule which help us to know whether a given number is divisible by another number or not. For example, it is given, now see here, the number given is 14. Now you have to just find out whether it is divisible by 2, whether it is divisible by 3, whether it is divisible by 5, or it is divisible by 9 or 10. Okay, so this can be determined by using the divisibility test or the divisibility rule. Okay, so let us first take out page number 77, where you have a chart which gives you the divisibility rule. Now page number 77 gives you a chart. ये देखिए, ये चार्ट दिया हुआ है. This chart gives you the divisibility rule. So let us go through these rules one by one and let us have the concept of divisibility rule. Now students, you can see the chart, and in this chart the first thing that is given is the divisibility by number 2. So whenever a number is given to you, you have to see whether the given number is divisible by 2 or not. Then you have to follow certain rule. आपको कोई एक नंबर दिया गया होगा और अभी आपको ये पता करना है whether that number is divisible by 2 or not. You have to follow certain rule. So that rule is here. Okay, so that rule is written over here. So we will go through this rule and we will just understand what this means. यहाँ पर देखिए, divisibility by 2. A number is divisible by 2 if the digit at its ones place is even, that is 0, 2, 4, 6 and 8. Okay, so here in the divisibility rule it is written that whenever you have a number, any number, small number, big number, कोई भी number आपके पास हो, you have to look to its ones place digit. ones place के digit को आपको observe करना है और आपको यदि वंस के प्लेस में जो भी डिजिट है वो यदि यही डिजिट होगा 0, 2, 4, 6 और 8, तो आप डेफिनेटली कह सकते हो कि ये जो नंबर है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2. नाउ यू हैव बीन गिवन विथ एन एग्जाम्पल. यहाँ पर देखिए, आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है. नंबर है 128. 128 नंबर है. तो आपको क्या करना है, आपको जो वंस के प्लेस का डिजिट है उसको ऑब्जर्व करना है. तो यहाँ पे वंस के पोजीशन में जो डिजिट है वो क्या है, 8. सो 8 if it is there in ones place, then that number will be divisible by 2. देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 0, 2, 4, 6, 8. तो आप देख पा रहे हैं ये जो नंबर है इसके वंस के प्लेस में 8 है, इसीलिए ये 8 जो है वो इवन नंबर है और इसलिए ये डिविजिबल बाय 2 है. ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन विथ सम मोर एग्जाम्पल. नाउ स्टूडेंट्स, जस्ट सी,
मैंने क्या किया है, मैंने देखिए आपके लिए 4 नंबर्स ले लिए हैं, ठीक है। तो ये जो 128 नंबर था ये तो आपने एग्जाम्पल में देखा ही था। तो इसमें आप देखिए वंस के प्लेस में यहाँ पर क्या नंबर है, 8 है। यहाँ पर वंस के प्लेस में कौन सा नंबर है, 1। यहाँ पे कौन सा नंबर है, 7। यहाँ पे कौन सा नंबर है, 2। ओके, सो एनी नंबर इज देयर। सो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे बड़ा सा नंबर है 10,672। इफ यू वांट यू कैन टेक सो मेनी एंड हियर यू टेक जस्ट 3। ओके, सो देखो इतना बड़ा बड़ा नंबर हमने ले लिया है। Then also if you are taking big numbers, then also you have to just look to your ones place। तो वंस प्लेस के डिजिट को आपने देखना है। तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल में आपको क्या कहा था कि इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, यदि ये सभी नंबर डिविजिबल बाय 2 है तो क्या होना चाहिए, वंस के प्लेस में कौन सा डिजिट्स होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 मीन्स ऑल द इवन डिजिट्स शुड बी देयर। तो यहाँ पे देखिए 128 में 8 क्या है आपका इवन नंबर। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ओके, सो इजीली वी कैन से 128 ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 2 है। अब आप यहाँ पर देखिए 121 ना वंस प्लेस में क्या है, ऑड नंबर है। सो यू कैन से not divisible by 2। So this number is not divisible by 2। Only looking at the ones place you can make out। खाली आपको वंस का प्लेस देखना है and you can make out whether the number is divisible by 2 or not। फिर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ 7 है which is also not so it is also not divisible। okay, now if you look to this number here, you can see ones place you have 2। so since it is an even number, so this number 10,672 is divisible by 2। okay, now if you look to this number, ये नंबर क्या है आपका, देखिए ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh। तो 11,11,11,113। this number so big number, but you have to look to the ones place। ones place में क्या है, odd number है, so it is not divisible by 2। suppose अभी यहाँ पर आपका ऐसा नंबर होता 2, 2, 3, 4, 6, 8, 0। okay, now this number, now again you have to look to the ones place। ones place में क्या है आपका 0 है which is considered to be an even number। so you can say that this big number is divisible by 2। तो आप देख पा रहे हैं सिर्फ वंस के प्लेस को हमको देखना है और उससे ही हम पता लगा सकते हैं कि वेदर नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। तो डिविजिबल बाय 2 इसका मतलब क्या है, ये 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो जो भी नंबर्स यहाँ पे डिविजिबल बाय 2, इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 0 एज रिमाइंडर। ओके, एंड नाउ वॉट एवर नंबर्स आर नॉट डिविजिबल, ये सब नॉट डिविजिबल है, तो इनको हम जब भी हम 2 से डिवाइड करेंगे इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। सो दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल, that is divisibility test of 2। now let us move to divisibility test of 3। now देखो आप divisibility by 3। a number is divisible by 3 if the sum of all its digits is divisible by 3। okay, number is divisible by 3 if the sum of all its digits is divisible by 3। now let us see the example over here so that you can get the idea of this statement। तो आपको ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसका आइडिया आपको ये एग्जाम्पल से मिल जाएगा, ठीक है। सो लेट अस सी, your number is given as 234, 234। now
what you are going to do is you are going to add all these digits. तो देखिए यहाँ पे ऐड किया गया है, देखिए 2 plus 3 plus 4. Okay, so as we add up 2 plus 3 plus 4, so it becomes your 9. So 2 plus 3 plus 4 gives you 9. Now you have to look to this. ये वाला जो आपको 9 मिला है, आपको इसको देखना है और आप देख सकते हो कि ये जो 9 है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3. ओके, सो द मीनिंग ऑफ दिस इज अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स, देखो सब सम किया हमने ये डिजिट्स को, and we are getting 9, and that sum should be divisible by 3. So you can see 9 is divisible by 3. That means this whole number is divisible by 3. Okay, so let us again see. Now see here, this number is having ones place 4 and here ones place 8. So both the numbers are divisible by 2. ये तो आप पता लगा सकते हो क्योंकि आपने वंस के प्लेस को देखना है और आपने देखा कि वंस के प्लेस में दोनों इवन नंबर्स है, इसीलिए ये दोनों नंबर्स 2 से डिविजिबल है. बट व्हाट अबाउट these two numbers, whether they are divisible by 3 or not. तो हमको ये देखना है कि ये दोनों नंबर्स 3 से डिविजिबल है या नहीं. तो ये एग्जाम्पल आपने इजीली देखा था कि as we have to add all these digits, we are getting 9, and as you add up these digits 1 plus 2 plus 8, तो you are getting 11. ओके, तो यहाँ पर आपको ये डिजिट्स को ऐड अप करके आपको कितना मिला है, या 9, और इधर कितना मिला है आपको 11. ओके, नाउ फ्रॉम दिस व्हाट यू कैन गेस इज दिस 9, ये जो 9 है दिस इज डिविजिबल बाय 3, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है, डिविजिबल बाय 3. देयरफॉर 234 is also divisible by 3. Okay, since this sum is divisible by 3, therefore 234 is divisible by 3. Okay, now look here, यहाँ पे हमको क्या सम मिला है 11. So this is not divisible by 3. ये जो 11 है तो 3 के टेबल में नहीं आता है. Therefore 128 is not divisible by 3. Okay, so आपने ये जब आपको मिलेगा यहाँ पे sum, you have to look to that sum and you have to see whether that number is divisible by 3 or not. So according to that you can say that the number given is divisible or not divisible. तो आप देख पा रहे ये जो 128 था ये 2 से डिविजिबल था, 234 2 से डिविजिबल था, बट 234 is divisible by 3 but 128 is not divisible by 3. Okay, so both the numbers, दोनों numbers 2 से divisible है but 128 is not divisible by 3. So you can say that 234 is divisible by 2 and 3. But what about 128? 128 is divisible by 2 but not with 3. Okay, so this is how you have to find out whether the numbers are divisible by 2 or 3. Okay, now let us see the next number, next divisibility rule. Now next is divisibility by 4. So what is the rule for that?
A number is divisible by 4 if the number formed by its last two digits, that is ones and tens, is divisible by 4. So again you have to go to the example to clear about this statement. What is the meaning of this statement? तो let us go for the example given to you. अब आप देखिए यहाँ पे एक नंबर आपको दिया गया है 3596. Okay, so according to rule what you need to find out that क्या करना है आपको, इफ द नंबर फॉर्म बाय इट्स लास्ट टू डिजिट्स, तो लास्ट टू डिजिट मतलब वंस एंड टेंस. तो ये नंबर को देखिए, अब जो रेड में लिखा है वो टेंस और वंस के प्लेस का डिजिट है, दैट इज 96. एंड यू नीड टू सी वेदर if the number formed by is divisible by 4 or not. So if 96 is divisible by 4, then the whole number, that is 3596, is divisible by 4. So what they have written, 96 is divisible by 4 since the number formed by the last two digit is 96 and which is divisible by 4. सो डिविजिबल बाय 4 कैसे करोगे, आपको डिवाइड करना है 96 को, आपने को 4 से डिवाइड करना है. एंड इफ़ यू आर गेटिंग 0 एज रिमाइंडर, यू कैन से दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 4. सो लेट अस सी. नाउ सी हियर, आई हैव टेकन द नंबर्स ऑफ द एग्जाम्पल्स. तो ये जो नंबर 128, ये नंबर तो आपने देखा था कि ये नंबर क्या है, ये नंबर 2 से डिविजिबल है, नॉट डिविजिबल बाय 3. ओके, एंड दिस 234, इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3. एंड हियर दिस नंबर you have seen that it is divisible by 4. So let us again compare these three numbers. हम देखते हैं कि ये तीनों नंबर्स जो आपके एग्जाम्पल में लिखे गए थे, ये तीनों नंबर्स हमें क्या दिखाता है. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये जो नंबर था, ये नंबर लास्ट वंस के प्लेस में 6 है, दैट मीन्स इट इज़ ए इवन नंबर. सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2. ओके, ये डिविजिबल बाय 2 है, ये भी डिविजिबल बाय 2 है, ये भी डिविजिबल बाय 2 है. ओके, बिकॉज द वंस प्लेस नंबर डिजिट इज even, isn't it? Now let us see whether this number is divisible by 3 or not. So for that we need to first what? We need to add up all the digits. तो देखिए यहाँ पे हमने ऐड करना है 3 से डिविजिबल है या नहीं ये जानने के लिए. सो यहाँ पर देखिए 8 प्लस 9, तो देखिए 8 प्लस 9 प्लस 6 23, isn't it? Now you have to go for the sum, that 23, ये 23 जो है ये क्या है, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3 के टेबल में हमें 23 नहीं मिलता है. दैट मीन्स दिस फुल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3. सो दिस इज डिविजिबल बाय 2 but not divisible by 3. Now here what we have seen, that this number is divisible by 2 as well as with 3, isn't it? Because as we have added up, we got 9 as our sum, and we know that that is divisible by 3. Now here this is only divisible by 2, okay, not divisible by 3. Now here you have seen that ये this number, ये number जो है ये 2 से divisible है but 3 से divisible नहीं है. और आपको अब क्या देखना है, whether it is divisible by 4 or not. अब जैसे ही हम डिविजिबिलिटी टेस्ट और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 देखेंगे तो तुरंत हमको क्या करना है, हमको ये टेंस और वंस के प्लेसेस को ऑब्जर्व करना है.
तो हमने 2 के जो डिविजिबिलिटी उसमें सिर्फ हमने वंस के प्लेस को ऑब्जर्व किया था। अब 4 डिविजिबिलिटी में क्या करना है, हमको ये टेंस और वंस दोनों के प्लेस को ऑब्जर्व करना है। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर 96 इज़ द नंबर विच कम्स under tens and ones place. Here it is 34 and here it is 28. Now you have to see whether these numbers are divisible by 4 or not. तो ये नंबर जो मैंने लिखा है ये नंबर्स 4 से डिविजिबल है या नहीं। सो लेट अस सी। देखिए 4 2 ज़ा 8 and 4 4 ज़ा 16. So the remainder comes as 0. So this 96 is divisible by 4. So we can write 96 that is divisible by 4. Therefore 3 5 9 6 is divisible by 3 5 9 6 is divisible by 4. Okay. So like this we can conclude. Okay. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमारा जो टेंस और प्लेस का वंस का डिजिट था वो इस तरह से था 34. Now let us just go for division method. So यहाँ पर देखिए 4th and 34. So you know that 4 8s are 32. 4 8s are 32. Now you are not getting remainder as 0. Isn't it? So you can conclude, आप यहाँ पर बोल सकते हो कि, तो आप बोल सकते हो not divisible by 4, therefore 234 is not divisible by 4. Okay, so this is how you need to find out. अब यहाँ पर देखिए आपने 28 है, आपको पता है कि 4 7 जा 28, so you know it is divisible by 4. Therefore 128 is also divisible by 4. Divisible by 4. Okay, so you can just see how it can be said that the number is divisible by 4 and number is not divisible by 4. तो यहाँ पे आपने क्या देखना है, टेंस और वंस के प्लेस को ध्यान देना है। तो अभी आपने क्या देखा कि ये जो नंबर है ये नंबर 2 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है, और ये जो नंबर था ये 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है बट 4 से नहीं है। दिस नंबर again it is divisible by 2 and 4. Okay, so this is how you have to find out whether the numbers are divisible by the other number given. Okay, तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया। देखिए ये जो नंबर्स आपको दिए गए थे एग्जाम्पल में, वही नंबर्स को हम लेकर हम धीरे धीरे डिविजिबिलिटी रूल को जान रहे हैं। ठीक है, सो लेट अस नाउ फाइंड आउट द नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल. नाउ द नेक्स्ट रूल इज a number is divisible by 5 if the digit at one's place is either 0 or 5. तो एक नंबर जो रहेगा उस नंबर के जो वंस का प्लेस है वहाँ पे यू नीड टू हैव 0 और 5 एज वन ऑफ द डिजिट and then only you can say that the number is divisible by 5. Now you just have to go through the example so that you can get the idea of this statement. तो यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है। फिर से आप देख पा रहे हो कि हमको क्या ऑब्जर्व करना है, वंस के प्लेस का डिजिट। तो आप देखिए वंस के प्लेस में क्या लिखा है, यहाँ पर 5 है। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि इफ़ द डिजिट एट वंस प्लेस इज़ आइदर 0 और 5, तो यदि आपके वंस के प्लेस में आपको 5 दिया गया है या 0 दिया गया है तो वो नंबर हम इजीली वी कैन से दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5. सो 1565 दिस नंबर हैज़ 5 एट ones place, so that is why this number is said to be divisible by 5.
सो लेट अस सी। देखिए मैंने फिर से वही नंबर्स को ले लिया है। नाउ व्हाट यू हैव टू सी, ये जो वंस के प्लेस का नंबर्स है, डिजिट्स है, इसको आपको ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5 व्हाट दे हैव सेड इज कि द वंस प्लेस शुड हैव 5 और 0। तो यहाँ पर देखिए ये तो 8 है, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। Now if you see this is also not divisible by 5. Here if you look to this digit, it is not divisible by 5. Now here you have 5 as a digit at one's place, so this number is divisible by 5. Okay, so you have to see whether the numbers at one's place is 5 or 0. Now suppose you have one more number इस तरह से. Now if you look to this number, here you can find the ones place is having 0. So this number is also divisible by 5. ओके क्योंकि यहाँ पे देखिए ये नंबर में 5 या 0 यदि आपको वंस प्लेस में मिला तो वो नंबर्स क्या होगा, वो नंबर्स इजीली इट इज़ डिविजिबल बाय 5. सो दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5. सो इफ यू लुक हियर यू कैन सी a number is divisible by 9 if the sum of all its digits is divisible by 9. So you have taken this number, okay, and what you are going to do, you have to add all the digits. तो यहाँ पे देखिए हमको all the digits हमने add किया है and what we are getting is 9. Now as the sum is 9, we can see this 9 is divisible by 9. Okay, so 9 comes in the table of 9. That is why we can say that 3402 is divisible by 9. So this rule matches with your divisibility test of 3. 3 का जो आपका रूल था similar रूल है ना. So let us see. Now see the same numbers I have again taken 128, 234, 1565 and 340. Now just look here what I did. I have added up all the digits, then I have got the sums. Now from the sum I can say whether these numbers are divisible by 9 or not. तो यहाँ पे देखिए 11 आया है, तो 11 is not divisible by 9. तो ये divisible by 9 नहीं है, therefore 128 is not divisible by 9. Okay, now if you look to this number here, 9 is divisible by 9, therefore 234 is divisible by 9. Okay, now if you look here, ये जो number है इसमें भी you have got 9. So this is divisible again by 9. So this full number is divisible by 9. Now here in this number you have got 17 which is not divisible by 9. Therefore 1565 is not divisible by 9. So this is how you have to get or you have to follow the rule, and then you can easily say whether the given big number is divisible or not. Now see the last rule, that is divisibility by 10. So a number is divisible by 10 if the digit at one's place is 0. So any number whose ones place is 0, कोई भी नंबर के ones place यदि 0 आपको मिल गया तो वो डेफिनेटली 10 से डिविजिबल होगा. तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 4250 ये जो नंबर है इसके वंस के प्लेस में 0 है, इसीलिए ये 10 से डिविजिबल है.
आप ये ऊपर वाले नंबर को देखिए, इसके वंस के प्लेस में 2 है, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 10. हियर ऑल्सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 10. हियर ऑल्सो no 0, so not divisible by 10. Here also not divisible by 10. Here also not divisible by 10. तो 10 से डिविजिबल हम कभी कर सकते हैं जब भी हमारे यूनिट प्लेस में 0 होगा. ओके, सो 4250 is divisible by 10 since the digit at one's place is 0. Okay, so like this we have to follow the rules and we have to find out that the given number is divisible by which other number. Okay, so as we go for exercise we will come to know. Now students, we have to go for exercise 7.4 where you have been given as first question, which of the numbers are divisible by 2? So you have to see the numbers and you have to say whether the given numbers are divisible by 2 or not. तो जैसे कि आपको पता है डिविजिबिलिटी बाय 2 में क्या रूल था हमारा कि वी हैव टू सी द यूनिट प्लेस. यूनिट प्लेस में यदि इवन नंबर रहा तो दैट नंबर इज गोइंग टू बी डिविजिबल बाय 2. सो लेट अस नाउ सी. यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस में 6 है, सो इट इज इवन नंबर. So 96 it is divisible D. Okay, now see here this number. Here you find 2 at one's place. So again this is divisible by 2. Okay, now here you can see it is the odd number. So this number is not divisible by 2. Here it is 5, so again it is not divisible by 2. Here this is 4, so 4 is an even number, so this number is divisible by 2. Then here 0 is again it is divisible by 2. Okay, तो इस तरह से हमने जल्दी कर लिया कि कौन से नंबर 2 से डिविजिबल हो सकता है बाय फॉलोइंग आवर डिविजिबिलिटी रूल. ओके, सो यू हैव बीन मेंशन्ड अबाउट डिविजिबल बाय 2, इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पे क्या फॉलो किया है, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2. नाउ सेकेंड क्वेश्चन you have to find out the numbers which are divisible by 3. तो 3 से कौन से नंबर डिविजिबल है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट फॉर 3 क्या था, वी आर गोइंग टू ऐड अप दिस नंबर्स. ये सब नंबर्स को हमें ऐड करना है. देन वॉट एवर इज द सम यू हैव टू सी वेदर दैट सम इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट. सो लेट अस गो फॉर दैट. Now students, see, I have done the question for you. So this you have to find out whether the numbers are divisible by 3 or not. So see, I have written the numbers, and what I did, I have added up all the digits and then I have found out whether it is divisible or not divisible. So see here, since 11 is not divisible by 3, therefore 83 is not divisible by 3. Now if you look to the second number, here also you have added up all the digits and you get 9. So since all the digits sum is divisible by 3, so the number 126 is divisible by 3. Okay, so for this too I have written the sentences, but for the next numbers I have not written the statements, so you can easily write the statements after observing this too. Okay, तो अभी यहाँ पर देखिए 219, again I have added up and I got 12. So what you are going to write, since the sum of all digit is divisible by 3, therefore 219 is divisible by 3. You know that 12 is divisible by 3. Okay, now next number is 317. As I have added up, I am getting 11. So this 11 is not divisible by 3. That is why 317 is not divisible by 3. Now next number is 543. Here you are getting the sum as 12 and 12 is divisible by 3. Therefore 543 is divisible by
3. Now 906, where you are getting 9 plus 0 plus 6 as 15, and again you know that 15 is divisible by 3. Therefore 906 is also divisible by 3. So this is how you need to find out. Now let us move to question number 3, where you have to find out which numbers are divisible by 4 or 4. Okay, so here again you have been given with 6 numbers, so you have to find out which numbers are divisible by 4 or not. Now see students, you have to find out whether the numbers are divisible by 4 or not. So for that you need to observe the tens and ones place. तो ये जो 2 digit का number है, इसमें तो आपको tens and ones place ही है. That is why we are looking for 48. So here you are getting that 48 is divisible by 4. So the whole number is divisible by 4. Here in B you can see 76. 76 is also divisible by 4. कैसे आप divide कर लीजिए 4 से, so you will get the remainder as 0. So you can easily say that 76 is divisible by 4. Now here in this number you have 3 digit number, so you have to look for the नंबर 27. 27 को आपको देखना है क्योंकि आपको टेंस और वंस के प्लेस के डिजिट्स को देखना है. ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे सब स्टेटमेंट्स भी लिख दिए हैं और आपको देख रहे हैं कि 27 जो है, दिस 27 इज नॉट डिविजिबल बाय 4. दैट इज वाई 627 इज नॉट डिविजिबल बाय 4. Now here you are getting 66. Again you know that 66 is not divisible by 4. That is why 266 is not divisible by 4. Now here you are getting 16. 16 is divisible by 4. That is why 716 is divisible by 4. Now 834, here 34 is again not divisible by 4. That is why 834 is not divisible by 4. So all the statements whatever is written here, ये divisible के लिए है, ये not divisible के लिए है. तो आप इस तरह से statement यहाँ पर भी लिखोगे. ठीक है, so this is how you can find out how the numbers are divisible by the other number or not. Now the next question is whether the following numbers are divisible by 5. तो रूल के हिसाब से क्या होता है, डिविजिबिलिटी टेस्ट में of 5 you have to look for unit place and you should have 0 or 5 at your unit or ones place. तो यहाँ पे देखिए 0 है, तो इसका मतलब ये डिविजिबल है 5 से. यहाँ पर आपको 5 है, ये भी डिविजिबल है 5 से. यहाँ इट इज़ 4, so not divisible. Only 0 and 5 should be there. Okay, here you are getting 2, so it is not divisible. Here 0, so this number is divisible. Here also 0, that is why this number is also divisible. Now again for the next question you need to follow the rule of divisibility test of 9. So 9 divisibility test is similar to your divisibility test of 3. 3 के जैसा ही आपका ये divisibility test 9 है. तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 81 है, इन दोनों डिजिट्स को आप प्लस करोगे, you are getting 9, isn't it? So 9 is divisible by 9. That is why 81 is divisible by 9. तो ये आप लिख सकते हो इजीली, है ना. फिर यहाँ पर देखिए 2 plus 0 plus 7. So 2 plus 0 plus 7 again gives you 9. So 9 is divisible by 9. So 9 is divisible by 9. That is why 207 is also divisible by 9. Now here comes, see, 438. So just add up all the digits. तो कितना हो जाएगा आपका, 7 plus 8. 7 plus 8 will give you 15, है ना. So this 15 is not divisible by 9. So that is why 438 is not divisible by 9. So ये हो गया आपका divisible, ये हो गया divisible, ये हो गया not divisible.
Okay, now go for next one, 603. So 603 always gives you 9. So that is why it is also divisible by 9. Now go for 61. 61 gives you 7, not divisible. Now here 373. 373 means your 10 plus 3, 13. So 13 is not divisible by 9. Okay, now the next divisibility test is about divisibility of 10. So in 10 you have the rule that if the unit place shows you the unit place has 0, then only the number is divisible by 10. तो आप यहाँ पर देख सकते हो यूनिट प्लेस 0 है तो ये डिविजिबल है, यहाँ पर भी यूनिट प्लेस 0 है, ये भी डिविजिबल है, यहाँ पे यूनिट प्लेस है 9, सो नॉट डिविजिबल. Here 8 not divisible by 10, here 0 so divisible by 10, here 5 not divisible by 10. So this is how you have to follow the rules and you have to take the divisibility test. Now next thing is highest common factor. So you are going to learn about highest common factor. It is known as HCF. So HCF is highest or the greatest factor that divides all the given numbers without leaving any remainder. It is also called the greatest common factor. So highest common factor means the factors, you have to take out the factors, and out of the factors whichever is the highest one, that you have to say as the highest common factor. It is also known as greatest common factor. So highest common factor, another name is greatest common factor or GCF. So you have to learn how you can find out the highest common factor, and for that you have to follow two methods. One is listing method and another one is common division method. So let us go for the highest common factor. Now you have already learned that highest common factor can be found out using two methods. So here first method is listing method. So if you are going to find out the HCF of 12 and 18, 12 और 18 का आपको highest common factor निकालने हैं, तो आप क्या करोगे? तो आपने फैक्टर्स तो पढ़ ही लिए हैं, क्योंकि फैक्टर्स में कैसे था हमारा, फैक्टर्स कौन से थे, दो नंबर्स जिनको आप मल्टीप्लाई करोगे और उसका जो प्रोडक्ट आपको देगा वो दो नंबर्स दैट वी आर मल्टीप्लाइंग इज नोन एज फैक्टर्स, isn't it? So when you are going to find out factors of 12, तो आप क्या करोगे, 1 12s are 12, तो 1 is a factor, then 2 6s are 12, it is a factor, then 3 4s are 12, it is also a factor. So all the factors you have written, हमने ये factors वाले पहले exercise में किया है ना. फिर 18 का factors निकालिए, 1 and 18, then 2 9s are 18, then 6 3s are 18. So you have written all the factors over here. Now as you have to find out the HCF, so you need to first go for common factors. So आपने क्या करना है, इन factors को लिखना है और इनमें से जो common factor है ये भी आपने already find out किया था पिछले exercise में. तो अब आपने इन common factors को निकालने हैं. तो आपने factors को निकाल लिए. देखिए 1 2 3 and 6 are the common factors. 1 2 3 and 6 are the common factors. So इनमें से सबसे बड़ा वाला फैक्टर क्या है, देखिए 1 2 3 में से 6 is the highest common factor. 6 is the highest common factor. So HCF of 12 and 18 is 6.
So like that you have to find out the highest common factor. तो उसके लिए क्या करना है, आपको जो भी दोनों गिवन नंबर्स है उसके आपने फैक्टर्स निकालने हैं. फैक्टर्स निकालने के बाद आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, और कॉमन फैक्टर्स में से जो सबसे हाईएस्ट और द ग्रेटेस्ट रहेंगे वो आपका हो जाएगा HCF और GCF. Okay, so this is how you have to find out HCF. So by listing method you have seen how we can find out HCF. Now this is the second method by which you can find out the HCF is prime factorization method or common division method. Okay, so as you know that two numbers are given to you, तो दो numbers को आपने इस तरह से लिखने हैं. देखिए, ओके, ये इस तरह से लिखेंगे आप. उसके बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स क्या हो सकते हैं. तो आपने देखा है डिविजिबिलिटी टेस्ट देखने के बाद आप इजीली पता चला सकते हो कि देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ 0 है, तो ये दोनों नंबर्स 5 एज ए कॉमन फैक्टर वी कैन टेक. ओके, और वी कैन ऑल्सो टेक 3 एज ए कॉमन फैक्टर. 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है. सो एनी नंबर यू कैन टेक. सो हियर यू हैव बीन शोड विथ 3 कैसे हो गया, देखिए ये 6 होता है टोटल और ये 3 होता है, तो 6 and 3 बोथ इज डिविजिबल बाय 3. सो यू कैन टेक 3 एज अ फैक्टर. सो यहाँ पर देखिए आपने 3 ले लिया, ठीक है. अब 3 लेने के बाद क्या होगा, 3 5s are 15, 3 5s are 15, then 3 10s are 30. So this is how you are going to write. Then as you have completed with this, ये दोनों नंबर्स आपने लिख लिए हैं, पर देखिए ये दोनों नंबर्स लिख लिए हैं. अब इन दोनों नंबर को आपको देखना है कि इसके कॉमन फैक्टर क्या है. तो इन दोनों के कॉमन फैक्टर 5 है, ठीक है. सो जस्ट राइट हियर 5. So 5 1s are 5 and 5 2s are 10. Okay, now as you can see here 1 and 2. So for this you can go for 2. तो यहाँ पर देखिए दोनों 1 1 बन गए, ठीक है. So your factors are 3 5. Okay, 3 and 5 it is written over here. So the highest common factor is 3 and 5. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर हमने 2 लिखा है, ये 2 क्या हो गया, ये तो एक ही नंबर का फैक्टर हो गया, दोनों का तो नहीं हुआ है ना. तो यहाँ पर आप देख सक रहे हो ये जो 3 है ये 5 है, ये दोनों जो नंबर्स है ये दोनों नंबर्स के फैक्टर्स है. बट यहाँ पे जो मैंने 2 लिखा है दिस इज नॉट अ फैक्टर फॉर बोथ, isn't it? So 2 is left behind. So 2 can be made 1 by adding 2 here. But दोनों कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, ये तो कॉमन फैक्टर नहीं हुआ क्योंकि ये 1 से तो नहीं जा रहा है, ओनली 2 से जा रहा है. Okay, so your common factor is 3 and 5. So that is why you have to take 3 and 5 as your common factor. So there here 5 and 10 we get 1 and 2 as the quotient of 5 and 10. Since there are no factors to divide anymore, we will stop here. Write the common factors, that is 3 and 5 that are left on left column. So as you have 3 and 5, you are going to multiply these two. So as you multiply you get 15. So 15 is the highest common फैक्टर. तो ये जो मेथड हमने किया है, ये मेथड में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो नंबर्स हैं देख पा रहे हैं, ये नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है और जो भी मल्टीप्लाई करके जो भी हमें प्रोडक्ट मिलता है दैट विल बी योर HCF. ओके, so this is regarding your prime factorization method and previous one was listing method. Now next topic is about least common multiple or LCM. LCM is least common multiple. So here again you have the
facts that has been given. So least common multiple is the lowest or smallest common multiple of the given numbers. So multiple, so remember this word multiple मतलब क्या होता है, बड़े numbers होते हैं, है ना. It should be equal or greater than the number given. So let us see. Now you are going to find the LCM of 8 and 24. So let us write the multiples of 8. तो 8 का टेबल आप लिखोगे. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40. Then we will go for 24. Now see multiples of 24. Now we will go for the table of 24. 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72, 24 4 जा 96. Now what you have observed is you are going to find out the lowest or the least, सबसे छोटा वाला, smallest. तो सबसे छोटा तो हमको यहाँ मिल गया. देखिए यहाँ पर भी 24 है एज ए मल्टीपल ऑफ 24 एंड मल्टीपल ऑफ 8 में भी 24 है. देखिए मल्टीपल ऑफ 8 में भी 24 है और मल्टीपल ऑफ 24 में भी 24 है. सो दिस वाज द लोएस्ट और लीस्ट. ओके, सबसे छोटा वाला है 24. सो LCM of 8 and 24 is 24. So the factor, we see that 8 is a factor of 24, so we can say that greater number 24 is the LCM of 8 and 24. Okay, so again this LCM can be obtained by using two methods, that is listing method. Again you are going to find out the multiples of 4. 4 के टेबल आपने लिखने हैं. मल्टीपल्स ऑफ 8 के टेबल लिखने हैं. देन यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन मल्टीपल्स. तो जो भी कॉमन है आपने लिखने हैं उसे, और सबसे जो छोटा वाला है दैट इज़ 8, दैट इज़ द मल्टीपल, दैट इज़ द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. Okay, now with the prime factorization method, again you have to take the two numbers. See here two numbers are taken. Now you have to find out which number has the common factor by which you can go for the prime factorization method. So here you can see that only 2 can be taken as factor for this. Okay, so 2 8s. Then again 2 can be taken and you have 2 4s. So यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे जो दोनों नंबर्स है उन दोनों नंबर्स के फैक्टर हमें नहीं मिल रहे. सिर्फ एक ही नंबर को हम स्प्लिट करते जा रहे हैं, बट 11 remains as it is, isn't it? So as we go for prime factorization method, so here what we did is we have only taken this number 16, and this number 16 can be splitted off using your number 2. So 2 8s are 16, then 8 2 4s are 8, then 2 2s are 4. So 11 remains like that only. Since 11 is a prime number, so it doesn't have any factor. Okay, only 1 and the number itself is its factor. So 11 is only have the factor as 11. So as we have taken here 11, so we are getting 1 and 1. So in LCM में क्या करना है, LCM में आपने ये लास्ट में 1 and 1 लाना है आपको, ये आप ध्यान में रखिए. ठीक है, HCF में आपने 1 and 1 नहीं लाना है, आपने जो भी कॉमन फैक्टर्स है वो लाना है. बट यहाँ पर LCM में आपने, यहाँ पर देखिए ये 1 and 1 आपको लाना ज़रूरी है. और LCM में देखिए आपने 1 and 1 लाना नहीं है, यहाँ पर यहाँ तक ही छोड़ दिया है, ये मैंने आपको बताया था. ठीक है, तो आपने यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे 1 1 नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स को आपको लिखना है. बट यहाँ देखिए यहाँ आपको 1 1 लाना है, and your LCM will be all the numbers that has to be
multiplied and the product is your LCM. Okay, so as we go for exercise, it will be clear for you. Now exercise 7.5 is based on your topics HCF and LCM. So first question is find the HCF of these numbers. Okay, so you have been given with pair of numbers. You are going to find out the HCF using कौन सा मेथड देखना है, लिस्टिंग मेथड. Okay, so let us start with the method. लिस्टिंग मेथड में क्या करना है, आपको फैक्टर्स लिखने हैं, देन यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स. Now students, see, I have solved the two problems where you have to find out HCF using your listing method. Now see, your first question given is 6 and 10. So you are going to first take the factors of 6. तो 6 का फैक्टर्स क्या हो सकता है, कौन से टेबल में 6 आ सकता है, आपने फैक्टर्स ऑलरेडी पढ़े हैं, है ना. तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है. सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर द डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी रूल में चलोगे आप, तो फैक्टर्स सबसे पहले 1 and 6 इज़ द फैक्टर, देन 2 can be taken as a factor, then it is divisible by 3 also, isn't it. तो आप डिविजिबिलिटी रूल पे चलिए तो आपको इजीली फैक्टर्स मिल जाएंगे. ठीक है, तो देखिए 1, 2, 3 and 6 because the factors are the number and 1 number itself, and 1 is 2 factors, and then 2 and 3. Okay, so now let us find out factors of 10. 10 देखिए यहाँ पे 1 and 10 तो है ही फैक्टर, साथ में आपके 2 है, then your 5 is also there, isn't it. So 2, why 2? Because 0 is in one's place. It is not a factor for 3 because digits को add करेंगे तो it becomes 1 only. 4 also divisibility doesn't have the tens and ones place don't have the number which is divisible by 4. Then 5 you have 0, isn't it. So that is why it is divisible by 5. And 10 you know, again unit place has 0, that is why it is divisible by 10. So अब जब भी फैक्टर्स यहाँ पे निकाल रहे हो HCF में, LCM में, you have to remember the divisibility test. तो divisibility rule से ही आप फैक्टर्स निकाल सकते हो easily. Okay, now as you have seen, I have written the factors here. Now what are the common factors, ये देखिए 1 and 1 and 2 and 2 common factors I have written. Now which one is the greatest or the highest, सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है 2, तो ये हो गया आपका HCF. So this is your highest common factor of 6 and 10 is 2. So this method is your listing method, ये आपका listing method है ना. फिर देखिए अभी second question, again you have to go for this number 72. Now as you know that divisibility by 2, so this is divisible by 2, and 1 and 72 is factor 1 and 72 हमने लिख लिया है, 2 लिखा है हमने. Then what about 3? 7 plus 2 is your 9, so that is also divisible by 3. Now go for 4. 4 में देखिए 7 and 2, so 72 is divisible by 4, so that is why the number is divisible by 4. Then you can go for 6, then 8 and 9. 9 again it is divisible. ठीक है, तो आप यदि 6 और 8 नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखिए. देन ऑल्सो यू नो 6 के टेबल में 72 आता है ना. सो you have 12 6 are 72, that you know, that is why I have written all the factors. तो आप डिविजिबिलिटी के बेस्ड ऑन करोगे तो सिर्फ आप 4-5 ही फैक्टर्स फिर आप लिखिए. ठीक है, तो मैंने सब फैक्टर्स लिख दिए हैं. देन फैक्टर्स ऑफ 81 again, see 81 number 81, 2 is not a factor, so here 1 and 81 are the two factors, then 2 is not a factor. 3 is a factor because 8 plus 1 is 9, then again 9 will be also a factor, so I have written all the factors over here. फिर यहाँ पर देखिए कॉमन फैक्टर ये 1 है,
और यहाँ पे ये 3 है, फिर you have 9. So 1, 3, 9 are the common factor and highest number is 9. So your HCF is 9. So this is how you have to proceed for the next question. So आपने अभी ये 15 का फैक्टर्स निकालने हैं, तो आपको पता है यहाँ पे 1 and 15 is one of the factor, then 2 is not a factor, क्योंकि यहाँ पर देखिए यूनिट प्लेस में ये यहाँ पर ऑड नंबर है. सो 3 कैन बी ए फैक्टर, सो आप 1 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 4 नहीं. देन यू कैन गो फॉर योर 3 हो गया आपका, isn't it? देन 5 कैन बी ए फैक्टर, है ना. 5 3s are 15. सो दिस फैक्टर्स आर देयर. देन 36 का भी आप फैक्टर्स निकाल सकते हो यूजिंग योर डिविजिबिलिटी रूल. ओके, तो हर एक फैक्टर निकालिए, देन कॉमन फैक्टर्स को अंडरलाइन कीजिए एंड देन यू फाइंड आउट विच वन इज द हाईएस्ट नंबर. देन हियर ऑल्सो यू नीड टू फाइंड आउट द फैक्टर्स. तो आप डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज़ कीजिए फैक्टर्स निकालने के लिए. ओके, सो इट विल बी ईजी फॉर यू. So like that you need to find out the factors and then find out the common factors. Now find the HCF of these three numbers using common division method. Now this method is the method where you are using this type, isn't it? So we will just go for this. See, I have taken the numbers. Now as per divisibility rule, सबसे पहले हम 2 से देखेंगे कि 2 इनका फैक्टर हो सकता है या नहीं. देखिए यहाँ पे 4 है, इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर. सो वी कैन राइट हियर 2. सो 2 1s are 2, 2 2s are, just divide it with 2. So 2 3s are 6, then 2 3s are 6, 2 6 are 12. Okay, so just divide the numbers. Again see the unit place, again you are getting even number, so again 2 can be the factor. So 2 6s are 12, 2 15s are 30 and 2 18s are 36. Okay, again see here, यहाँ पे 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है. So this number cannot be cancelled with 2, cannot be divided with 2. So let us move to 3. देखिए 3 सभी के लिए कॉमन फैक्टर है. सो वी कैन राइट 3 2s are 6, 3 5s are 15, 3 6s are 18. Okay, now here again you have got 2 prime numbers and 1 composite number, so you have to leave this. यहाँ तक कि आपको छोड़ना है, क्योंकि आपको कोई भी कॉमन नंबर्स नहीं मिल रहे हैं. So your HCF will be 2 into 2 into 3. यहाँ पर जो नंबर्स है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है. तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, 2 2s are 4, 4 3s are 12. So your HCF is 12. तो यहाँ पे आपको कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं मिला, इसलिए आपको यहाँ तक ही उसे लेफ्ट करना है और फिर ये जो तीनों नंबर्स है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है. सो लाइक दिस यू कैन फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फॉर 3 numbers. Third question is list the first 5 common multiples and then find their LCM. So multiples you know they are unlimited. तो आपने क्या निकालना है, 5 common multiples of the given numbers and then find their LCM. So you are going to find out again the multiples and then you have to list the first 5 common multiples and then find their LCM. Okay, because you are going to find out the lowest or least common multiple, so only 5 multiples is sufficient. Let us see how we can go for it. Now students, see, I have done the LCM. So here your numbers are 2 and 3, so you need to first take out the multiples of these 2 numbers. So here multiples of 2 is equal to 2 4 6 8 10, and then multiples of 3 is 3 6 9 12 15.
Okay, now your LCM comes as 6. How your LCM comes as 6? You know that the common multiple here is 6. देखो इन दोनों में, and you need not have to go further because LCM is the lowest, सबसे छोटा वाला निकालना है. So you have the first number as 6. So you can consider this LCM as 6. Okay. Now your common multiples will be, so common multiples you have to write up to 5. 5 common multiples you are going to write. So that is why we have written up to 5 numbers. Now again see the second one, you have to write the multiples of 3. So here we have written 3, 6, 9, 12, 15, 3 का table, 5 का table, 5 तक ही लिखा है. Then what you are going to find out? The common multiple. So here the first common multiple is 15. So LCM is 15. Okay. So in this way you can proceed for the next sums. Now see, you can go for the table of 40 and table of 60 and you can get the common multiple out of these two, and you can say that minimum, that is the lowest one, is your LCM. Here also same thing, 15 ka table, 5 common multiples write down, 20 common multiples write down, and then you find the LCM in the similar way how I have found out. Okay, तो आपने सिर्फ ये tables को लिखना है, and that too also 5 multiples you are going to write. Okay, now here in the next question, find the LCM of given numbers by common division method. So here again you have to go for common division method, where you have to follow this method. Okay. Now see the fourth question, where you need to find out the LCM using common division method. तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है वहाँ पे क्या कौन से नंबर्स दिए हैं, 3 and 9. तो आपने क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करना है. तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो नंबर 3 है और जो नंबर 9 है, ये दोनों नंबर्स 2 से डिविजिबल तो है नहीं, 3 से डिविजिबल है. दैट इज़ वाई वी हैव टेकन द फैक्टर 3. ठीक है, तो 3 से जैसे कि हमने यहाँ पे कॉमन फैक्टर ले दिया है 3. सो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. ओके, नाउ हियर 1 is there and 1 is neither prime nor composite, but here you have one number, that is 3, which is prime number. So again that can be only divisible by the number itself. So we have taken 3 here, and ultimately both the here number is 1. तो हमारा हमेशा LCM में हमको ये ध्यान देना है कि दोनों यहाँ पर हमें 1 मिलना चाहिए नीचे. और HCM में कैसे था, जैसे कि कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है तो वहीं तक वो स्टॉप करना पड़ता था, बट यहाँ पर यू नीड टू गो अप टू द whatever is the factor, you need to get 1. Okay, so here just go for multiplication of 3 multiplied by 3, that is 9. So your lowest common multiple is 9. So listing method में जिस तरह से आपने निकाला था, ये लिस्टिंग मेथड में भी आप यदि इन दोनों नंबर्स को फैक्टर्स लेके निकालोगे तो भी आपको LCM 9 मिलेगा, और यहाँ भी ये मेथड से करेंगे तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा. Okay, now go for 8 and 48. Now from the number itself you can make out that these two numbers are divisible by 2. So we have taken the first factor as 2. So 2 4s are 8, 2 24s are 48. Now again from 4 and 24, again these are having the factor 2 as common. So we have taken 2. Then 2 2s are 4, 2 12s are 24. Then again these two numbers are divisible by 2. That is why again we have taken 2 here. 2 1 are 2, 2 6 are 12. Now we have got here 1, but here again further you are going to divide by 2. So as you know, 2 3s are 6. So you are getting a 3. Now 3 is prime number. That is why again it will be divisible by 3.
So you have here 1 and 1. So all the numbers whatever you found out as a factor, 1 2 3 4, 4 2's and 1 3. So let us just multiply 4 2's and 1 3. You will get 48. Now here you have 3 numbers. So again you have to take the 3 numbers. Then find out which one is the common factor. 2 is the common factor. See, 6, 8 and 12. 2 is the common factor. So 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 6 are 12. So again from these 3 numbers you can find that these 2 numbers had 2 as a common factor. So just go for these 2 numbers. तो ये 3 को वैसे के वैसे ही रखना है. 2 2s are 4, 2 3s are 6. Then you can see here 2 is there and all these 3 numbers are prime number. So one by one we will just go for. तो 2 से पहले हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ 1 मिलेगा. फिर हमें 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो we are getting ultimately 1 1 and 1. So as we multiply all these numbers we are getting 24. Okay, so you have to follow the divisibility rule to find out the common factors. Now rest 3 questions you can easily go for it. देखिए यहाँ पे 2 है, 5 है, 10 है. So you can easily say that the numbers 2 and 10 can be divisible by 2. तो सबसे पहले 2 as a factor ले लीजिए. Then you have 5. So you can go for the calculations easily. यहाँ पर भी आप देखिए तीनों numbers डिविजिबल बाय 2 है इसलिए आप 2 को पहला फैक्टर ले लीजिए. यहाँ पर देखिए तीनों जो नंबर्स है, फर्स्ट यू कैन टेक 3 एज द फैक्टर बिकॉज ऑल दिस 3 नंबर्स हैव कॉमन फैक्टर 3. तो 3 आप पहले ले लीजिए, बाद में आप इसको सॉल्व कीजिए. ओके, सो दिस 3 यू कैन ईजीली सॉल्व बाय फॉलोइंग द टेक्निक व्हाट इज गिवन इन योर book as well as whatever is explained to you. So with this we complete off with chapter 7, chapter number 7, factors and multiples. So please go through this chapter. This is very important chapter because this whatever you have learned you will also use it in your हायर क्लासेस. सो आपने ये जो डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े हैं, आप जो HCF LCM पढ़ रहे हैं, ये सभी चीज़ें आपको हायर क्लासेस में मैथमेटिक्स में ज़रूरी है. तो आप इसे पढ़कर भूल मत जाइए. प्लीज़ रिमेंबर द मेथड्स एंड you have to remember the divisibility rules by heart. Also you have to go for the tables. Okay, so you should be thorough with your tables आपको बाई हार्ट करना बहुत ज़रूरी है. और साथ में जो डिविजिबिलिटी रूल दिए गए हैं वो भी आपको बाई हार्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि वो सब आप दोनों को थॉरो रहेंगे तो इजीली आप ये सभी सम्स कर पाओगे. ठीक है, सो गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स वॉट एवर हैज़ बीन टॉट टू यू and please go through your textbook examples. Okay, so whatever homework has been given, just try to solve all that problems, and if you solve that problem all the concepts will be clear. So please go through the chapter well, very important chapter. Okay, so thank you.